ये मेरे बड़े दिल के करीब है ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक, और मैं अरसे से इंतजार में था कि हम कब इंडिया वॉइस फेस्ट में क्राउड डबिंग, द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ डबिंग के बारे में बात करेंगे। आप क्राउड डबिंग कहिए या फिर जैसा कि हम कहना चाहेंगे एम्बियंट वॉइसेस कहिए। Welcome everyone to this hot topic Hi. today. Thank you. Crowd Thank you. dubbing. Thank you, Rajashree. Thank you. So they say, दोस्तों imagine a situation where you enter a fish market. आप फिल्म देख रहे हैं, fish market का सीन चल रहा है and it's silent. कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मेन एक्टर एक्ट्रेस आ गए, अपना काम करके चले गए। और इमेजिन अ थिएटर जहाँ पर कुछ फुसफुसाती आवाजें नहीं आ रही हैं, ये आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं आपको, ऐसा कोई सीन चल रहा हो, या कोई ऐसा सीन चल रहा हो, कोई शादी जहाँ पे आवाज ही ना हो, कोई पार्टी जिसमें गॉसिप्स ना सुनाई दे रही हैं, तो कैसा होगा? दिस इज व्हाट क्राउड डबिंग, एम्बिएंट साउंड्स इज ऑल अबाउट। कि हाँ, ये जो आवाजें हैं जो पीछे से थोड़ा बहुत आपको सुनाई देगा, तो साइलेंट एयरपोर्ट इमेजिन कीजिए कि कैसा होगा। आवाज तो होगी ना, आप भीड़ भड़के वाली जगह पर जाएंगे, आवाजें तो आपको सुनाई देंगी, तभी तो वो माहौल बनेगा, वो समा बनेगा। तो दिस इज व्हाट क्राउड डबिंग इज ऑल अबाउट। जब सिनेमा में या सीरियल्स में या किसी डॉक्यूमेंट्री में या फिर इवन छोटे एड्स के लिए आपको उस तरह का समा बांधना है, तब आपको क्राउड डबिंग, इन आवाजों की जरूरत पड़ती है, जहां पर इकट्ठा लोग आते हैं एक माइक पे, वो 3-4 लोग जब साथ में बोलते हैं, उसका जो समा बनता है, जो आवाजें आती हैं, उसे हम कहते हैं एम्बिएंट साउंड्स या क्राउड डबिंग। तो जब ये फिल्म का, सीरीज का, एड का इतना जरूरी हिस्सा है, तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई न्यू कमर आया तो चलो तुम क्राउड से शुरू करो। तो यानी इस तरह का है, सो इम्पोर्टेंट एंड सडनली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये क्या चीज है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। एंड ये जो आज हमारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैनलिस्ट हैं, अमेजिंग पीपल अराउंड हियर, मैं इनसे शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मीना जी से पूछना चाहूंगी। मीना जी, दे से 2 इज कंपनी, 3 इज क्राउड, तो क्या यही Well said, very, very well said. क्या यहीं You से know, your- शुरुआत हो गई कि भाई ये सिर्फ क्राउड चल रहा है? तो ये चक्कर क्या है? हाउ डिड, आई मीन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद, क्या आपने ऐसे शुरुआत की थी? हाउ डिड इट, आपने कैसे शुरुआत की और आपका क्या इसमें नजरिया है? Okay. Now, I started with ads, with ad films, lending my voice for ad films. Then I did FM radio and I did animation, Disney animation. Now, while I was doing these things, I was very fortunate to have started with ads and all, you know. So while I was doing these things, animation, Disney ke, Mickey Mouse, Chip, I was Chip in Mickey and Friends. So while I was doing these, I used to meet so many artists. So 1 or 2 artists asked me that, "Tum crowd karogi kya?" I said, "Kya matlab?" So they said, "Kal free ho या कुछ recording है?" I said, "नहीं, कल तो मैं free हूँ." This was my initial days, but I had already done a lot of ads and all, ads and animation and FM radio. I had one regular weekly program on FM. So I said, क्या मतलब इसका? So they said, तुम free हो कल पूरा दिन तो आ जाओ. I said, ठीक है, because I was very curious to know what is crowd. So they said, crowd dubbing करेंगे, आ जाओ. I went over there, and what I saw was there are 4 to 5 male artists and 4 to 5 female artists. It was some Hindi film, Indian Hindi film, and उसका crowd हमें करना था. And I was like blank. I said, पता नहीं क्या करना है, मुझे कुछ बोलेंगे बोलने के लिए, तो देखा जाएगा. But what I saw over there, I found that it is a wonderful, wonderful learning experience. You learn the A, B, C, D of dubbings, recordings over there, how to stand in front of the mic, how to speak your lines, throw away all your inhibitions, leave them behind, and to be punctual. That is one very important aspect of crowd dubbings. They tell you to reach at 10, you will have to reach at 10, because the other artists are
depending on you also. Y'all are going to dub or perform in a group, so they cannot start Yeah. till all are there. They will not start. It is wrong. So you learn Yes. punctuality, you learn to how do you say, community, matlab, so many people, you work together, so you Yes. gain confidence, you know how to work with the others and in sync with what they are saying. And you also get to learn from them who are performing. I was a newcomer to crowd. I didn't know kya karna hai. So I was looking at them. I used to look at them, and then like one of them, she used to nudge me and say, "Bol, bol, bol, aise hi bol, aise bol." So I learned it, and I learned so many things from there. Which I didn't know when I was doing ad films. एड फिल्म्स का क्या है, यू डू वन लाइन और टू लाइन्स, एड्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है, एंड यू कम बैक. Right. Yes. So Yes. you manage to do, there are 20 takes, 30 takes, you manage to give out your best. But crowd mein there are, I don't know how to express it, there are no lines also, there will be no script most of the Yes. times, there's no Just एक script for situation crowd. दे देते हैं. They'll just give you a situation. So it is हाँ, you're hilarious here. also. They just tell you, the director and the sound engineer will just tell you that अभी ना एक market का scene है, हाँ, तो उसका कर लेते हैं. That is all. So you go over there and you just you just wonder what to do. So then you'll see that your person all the females are standing on one mic, near one mic, and all the males will be standing on another mic. Generally 2 mics are there. So when you see the others, they'll just say that हाँ, ये हम ऐसे करते हैं, तुम कैसे करती हो? So you just start answering them. You just start speaking to them. Sometimes it is that way. So you get to learn all this. So this is crowd dubbing. And what else did you ask me, Rajeshri? So you've experienced already. You were a part of I this. have done 3 or 4 films, just 3 or 4 films, but I learned a lot over there. Absolutely, yes. So I'd also like to ask Renu now about this. आप जब डायरेक्शन कर रहे थे, उस समय आपने डेफिनेटली क्राउड सेशंस कंडक्ट किए होंगे, डायरेक्ट किए होंगे, लोगों को बुलाया होगा. तो उसका आपका अनुभव कैसा? You had newcomers come into the session. So there's a lot here because I was learning also and I was interning at the same time. And I think I've learned from the best, like people like Kalpesh Parekh. He's a brilliant director. Shubhrato Ghosh, who is, I think he's an HOD in Sony now. They were so good. And when I would watch them conduct crowd dub sessions, they would be having so much fun, and I think that as a director especially, it is very important that all of us are having a good time as well, because crowd dub sessions last for hours, like at times maybe 12 hours even. So that energy has to be there throughout. And so yeah, and also I think the artists that I worked with back then were again really amazing, like Bakli ji, Aditya Senior, Aditya Junior, Nilufar, Pallavi Jadhav, Feroz, Sachin Gole, and yeah, the likes. At times we would have a few We have so many names who started with this. Yes, and they're doing so well now. Yes. So It's always something to talk about. Yeah. And so in crowd up, what happens is we also get few one-liners dubbed, or one scene characters dubbed. It's not just ambient voices. So for those kind of characters, we would like somebody who is a little experienced, who knows what they're doing in front of the mic, because you can't be teaching everything to everybody. Right. So the scope of having new voices in every crowd session isn't much. Like you can maybe call 1 or 2 new voices if it's a crowd of 12 people. So yeah, new voices will take time. Again, it depends on their confidence level as well, their willingness to learn. वो जो willingness to learn है वो बहुत important होती है किसी भी फील्ड में actually. Yes. And unless you're interested, जैसे पिछले सेशन में सब बात कर रहे थे कि बस टाइम है, कुछ नहीं चल रहा है तो डबिंग ट्राई कर लेते हैं, अगर वैसा एटीट्यूड लेके आते हैं तो
आप चाहकर भी उन्हें नहीं सिखा पाओगे, आप चाहकर भी उन्हें ग्रूम I नहीं कर know. पाओगे। बिल्कुल, और ऐसा भी हुआ होगा ना, इसने ये लाइन बहुत अच्छी बोली तो वो छोटा सा रोल जो है अगले सीरीज में हम इनको दे देते हैं। ये तो हुआ होगा करेक्ट, डेफिनेटली। डेफिनेटली हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कैरेक्टर होता है जो एंड में आता है, जिसकी एक लाइन होती है, देन इन द नेक्स्ट पार्ट यू कम टू नो दैट ओह इट्स अ बिग कैरेक्टर, इट्स लाइक अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, you know. Yes. So at times if the person has dubbed really well, they get that part. So yeah. Yes, so it's something to look forward to, guys. कि अगर आप Absolutely. कोई अगर आपको कहता है आप अभी नए आए हैं और आप क्राउड डबिंग से शुरुआत कर लीजिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अरे यार ये क्या बोल दिया। आपको इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखना है कि क्या बात है, चलो हम ग्रुप में रिकॉर्ड करेंगे, हम वहां से काफी सारी चीजें सीखेंगे। आपका नेटवर्क भी बनता है, बाय द वे। यू विल नो कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, किस किस को आप अप्रोच कर सकते हो। सो यू हैव टू टेक दिस पॉजिटिवली कि हाँ जी हम ये काम करेंगे। एंड जैसे ही आपको, जैसे रेनू राइटली सेड कि कभी कभी वन लाइनर्स आते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ एक इंफॉर्मेशन पीस पास ऑन करना है, तो तब अगर आपको माइक के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि आप आइए, राहुल आप उठ के आइए या सचिन आप उठ के आइए और आप ये लाइन बोल दीजिए, तब आप वो लाइन सही तरीके से और विद प्रॉपर एक्सप्रेशन फटाफट बोल देते हैं, तो डायरेक्टर विल बी कन्विंस्ड कि भाई हाँ, इनको अब हम आगे बड़े रोल के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी सोचिए कि आप जब कहीं कोई चीज नहीं खरीदते हैं तो आप 10 सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तो एक प्रोडक्शन थी जब या डायरेक्टर सोच रहा है या कास्टिंग डायरेक्टर ये सोच रहा है कि हम आपको कास्ट करें या नहीं करें, तो ये एक तरह का ट्रायल सेशन हो जाता है कि भाई हाँ बहुत बढ़िया, इनको तो आता ही है, जैसा मैंने बोला था इन्होंने बोल दिया था। तो रियली अमेजिंग, वेरी गुड, और हम इनको आगे अगले बड़े रोल्स में कास्ट करेंगे। तो ये इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, आई से। विल यू एग्री एवरीवन? Absolutely. Yes. And like you Uh, said, Rajshri ji, that network banta hai. For me personally, after I started dubbing full time, I did जी. crowd dubs for a very long time, like maybe for 2 or 3 Okay. years. And हाँ. that is when slowly and gradually people started recommending my names in different studios or for different projects. Yes. अच्छा ये ना शायद रेनू अच्छा कर लेगी, उसको बुला लो, वो अच्छा कर रही है, and all that. You know, it's like word of mouth. I didn't even have to ask people कि please मुझे ना studios के number दो या whatever. It just started flowing. So again, that willingness to learn and the passion for the craft has to be there. It has to be there. Rajashri, I feel Rohit, yeah. I I feel wanted to ask about the other side, Rohit, कि आप Yes, उस I'm तरफ coming to बैठकर जब yes, but more importantly, what points we have put forward now, I feel today it is very important for every artist, every voice artist to be an actor, because there's so much language dubbing happening. There's so many audiobooks, podcasts happening. I feel crowd dubbing is where they can start getting trained as an actor also. You know, so when they come to the final stage of performing solo, they might be well trained or at least 50% trained in acting skills, because they're luckily I have worked on projects where there have been elaborate crowds, like 100 people to 80 people, 50 people. So exactly, I wanted to ask you कि उसमें Yeah. what was your experience like, you know, technically how did you handle it? कि Yes. हम तो जनरली देखते हैं वी एक माइक दे दिया मेल्स को, एक फीमेल्स को दे दिया, बट व्हेन देयर इज अ लार्ज ग्रुप तब आप Yes. कैसे उसको हैंडल करते हैं? So we'll take a case study here. The film is Thakre the film, which was a biopic on Bal Thakre. So ideally, he always had crowds in front of him and huge crowds. Yes. So when I saw Yes, the yes. first edit, I said that we need to have a elaborate and enormous crowd dub to do this. And eventually, looking at the sound palette that was in front of me, I figured out that we need at least 100 artists. Now, Oh my God. when it came to 100 artists, and we had to do the crowd dub in 2 languages, Hindi and Marathi, because the film was going to be released in 2 different languages. So every slogan had to be written in Hindi and every slogan had to be written in Marathi. So we had to take a crowd, we had to select 100 artists who would do both the languages. We couldn't separate that. So that was one thing. Secondly, then the next challenge was figuring out where we will do this. So the only place we can do this is Yash Raj.
There is no other sound stage in Mumbai which can accommodate 100 artists at one. 100 people And together. yeah, 100 people together. Yes, exactly. Then my challenge was time constraint, as Meena ji just said that it teaches you punctuality. So my production had told me that we have Yashraj for 2 days, और हमें ये पूरा crowd करना है. And so what I did was, so the crowd director that time was the veteran artist Uday Sabnis. So Oh, Uday ji and me got into the studio and we did a pilot track for all the crowd places. Wherever there was crowd, wherever there was slogan, we did we kind of did a pilot track. So he went in the dub room and he just did his solo voice ki, for example, Jai Maharashtra. So he just hmm, recorded that pilot track so that when we went to Yashraj, we had a pilot track of crowd ki yaha karna hai. Because only then, only if I was organized, I could organize 100 people. Otherwise, it is impossible. absolutely. Yes, So yes. once that pilot track was in place, then we did a mock rehearsal for 30 minutes with 100 artists. In the meantime, I had gone the earlier night to do the miking, because uh, one rule is, the more number of artists, you cannot double the track. आप 4 मेल 4 फीमेल में आप डीटी कर सकते हो. आप Right. आप 100 आर्टिस्ट के साथ डीटी नहीं कर सकते. यू हैव टू और माइक, यू उसकी नीड टू बात ही कुछ और है. उस एनर्जी की यस, बात ही कुछ और है. तो 100 एग्जैक्टली. लोग साथ में कुछ बोलेंगे. Yes. So you need to have multiple mics there. You cannot ask them to do a DT. They will not. It is not technically possible, and it will phase. So ideally, then, so I did the miking. We so we recorded that crowd in surround sound. So there was a 5.1 microphone. There were almost 4 boundary microphones. There was a decatry which was in front of the hall and back at the back of the hall. So we were recording almost 20 tracks together. Oh my God. So that was the amount of microphone placement that we had done all across the hall, so that we don't miss out on anything. We don't miss out on the energy. We don't feel the need to do a DT, because Right. with that, so that was how we actually orchestrated the whole thing. And it was a great experience. We managed to do everything in 2 days. There was nothing that we left out, and all thanks to Uday sir, because he's such a veteran artist and he's such a Yes, senior guy. yes, yes. He was at the forefront of maintaining discipline, maintaining everything in the recording hall. So that way, we managed to do that with organization, because I feel 50% of the crowd dubbing responsibility is also on the sound design team. 50% is on the Absolutely. artist and the supervisor team. 50%, because today with tech specs, today with language dubs, today with international deliveries, you need to be all the more careful of how are you recording crowd. You cannot just put people in the room and tell them to do a murmur. Today, murmur doesn't work. You need to give each one lines, or the artist, like our panelist said, the artist have to imagine lines. Right. एक So yeah, I हबब mean, भी होता था, पता है हमारे टाइम पे. आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल अ टर्म yes, कि या yes, फिर हबब yes. चाहिए, हबब. That is the term they use in UK. UK, the term for crowd dubbing is habab artist or wala. Hollywood uses Wala. the term wala, वाला, या. WALLA. Yeah, Wala. because Yeah. according to Hollywood, if you say wala 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 in continuous thing, it sounds like someone is murmuring. So that's why. So yeah, Interesting. that's why it is called wala. Yes, yes. And I also remember कि crowd कहते ही लोगों का चेहरा उतर जाता था कि क्या डबिंग करवा रहे हो crowd. और I अगर don't know why. नया जब शब्द आया No. था वाला, तो किसी को समझ में नहीं आता था. तो वाला करना है, चलो वाला करना है, वाला करना है. Netflix. Easy हो गया था थोड़ा सा. Yes. So मीना जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि a lot of people they start with crowd dubbing, then they move on to do major roles, फिर वो दोबारा इस तरफ नहीं आते. एंड कई ऐसे भी लोग हैं जो इसी को पसंद करते हैं.
इसी में उनको Yes. मजा आता है और Yes. इसी को Yes. करते ही रहते हैं एंड इन्हें कुछ और नहीं करना है, ऐसा भी है। Yes. 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 तो Yes. मुझे ना कुछ Absolutely. आता Very है true. that aspect Very true. कि ये हाँ You know, crowd dubbing is very time consuming. Generally Yes. shift system hota hai usme, so it will be 10 to 6 or beyond or whatever. So whether you are you have too many dialogues or too much work or no, you have to be present throughout the shift. There is no way you can go out, you can leave, so you have to be present. So if you have time, if you have that much time to give, then you can take part in crowd. Okay, that is one constraint. What happens is, once a person has learned the ropes and has moved to bigger things, moved to bigger characters, bigger projects, then one cannot give that much time for crowd. You cannot give a whole shift because you are doing maybe 3 to 4 recordings in a day. So how Right, can you do right. crowd? How can you give 10 hours or 9 hours to crowd? You cannot do that. हाँ, because So फिर that आपको happens. प्रोड्यूसर्स बुलाने भी लग जाते हैं ना, आपको मेन रोल देके Yeah. बुलाने भी लग जाते हैं, तो Yes, समय ही नहीं yes. So रहता। Yeah. then that person will not do crowd. But Right, yes, I right. have seen people who are doing crowd since 20 years. And I failed to understand. Once I asked the dubbing director, I said, Kya baat hai? I know this person, I'm seeing this person doing crowd dubbings for 20 years. This person is a good artist. In fact, most of them are really good artists. So why do they do crowds? Why don't they go to a higher space, do character dubbings? So the reply that I got from the dubbing director was that, Meena, they are very happy. They are very content doing this. There is no stress involved in this because there are no dialogues. There is no, rejection. Hoga nahi. 99.99% of the time there's no rejection, because whatever you speak in front of the mic in a crowd dubbing, at the end in the film or the show, you will not, there is no clarity, you will not hear what the crowd artist has spoken. It'll be too low, too whisperish, so itna kuch impact nahi hone wala hai. So you're stress free when you're doing crowd. And Right. I call it, the most important thing is, it is a picnic. So people who like picnic, and it is a paid picnic. So you're just going there, thoda bahut kar rahe ho, hasi mazak, you're meeting so many people, you're gossiping, thoda bahut mic ke samne you're performing, and you're enjoying yourself. There is no stress. But And in when a we lot do, of cases it's paid at the end of the session also. ये भी तो होता है ना? yeah, cash mil jata mostly. पहले होता Yes, था, अब नहीं and होता। when we do characters or when we do shows or when we do bigger characters, some stress is involved. However much you are a veteran, or since how many years you're doing that, thoda sa to deliver, to live up to expectations, wo hai, thoda bahut hota hai. So that stress is there, which is not there. I believe that stress is not there when you're doing crowd. So maybe for that reason people are doing it for 20 years, and of course cash mil jata hai usi sham ko, which So we that I get think maybe after 1 year. yes, हमारा तो लंबा एक साइकिल चलता है. But also Renu, what do you think? People who moved on, जो बड़े रोल्स करने लगे हैं, like if people, अगर आपने भी शुरुआत की हो, for example क्राउड रिकॉर्डिंग से, फिर आप अच्छे मेजर रोल्स कर रहे हैं, फिर अचानक आपको एक दिन कॉल आता है कि आर यू अवेलेबल फॉर अ क्राउड सेशन, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप मुड़कर जाना चाहेंगी, या आप ऐसे लोगों को जानती हैं जो दोनों चीजें करते हैं? Oh yes, I know quite a few people जो अभी भी दोनों चीजें काफी हद तक मैनेज कर लेते हैं. So what happens is in my past experience as well, when I started doing ads in Punjabi and Gujarati, तो ads आया करती थी. अब ads के लिए आप मना नहीं कर पाते हो, because that's quick money, and like Meena ji said, 1-2 lines होती हैं, तो ज़्यादा काम भी नहीं होता. So I would tell the coordinator or the studio कि देखो भाई, like I would communicate very clearly कि मेरे को ads का डब आया है, like I have to go for 3 films. So either you adjust, let me go and I'll come back, or if you can call somebody, please do that. Like I wouldn't like your work getting affected because of me going away. So most cases they would be see again, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हो ना एक पॉइंट के बाद, उनको पता है कि अगर ये आर्टिस्ट उनके सेशन में है, बहुत स्मूथली काम हो जाएगा, है ना? तो हाँ, I'll agree.
Yes. Yeah, so at one Yes. point I had reached that stage and they would happily agree कि ठीक है तुम जाके आओ, you know, तो वैसे मैनेज हो Right. जाता था. But after a point ऐसा भी हो जाता है, like for me what had started happening is कि in most crowd sessions the male artists would have a lot more work to do, you know, Right. in big films, like I'm sure in films like Thakre and you know, Mohenjo-daro, Ben-Hur, you know, all these war kind of films, where the Right. men have to do all those big fight sequences and stuff like that, and we female artists would just keep sitting. उसमें मैं कभी कभी Right. इतना बोर हो जाती थी ना कि मेरे से जितना बेस होता था मैं उसमें जाके कुछ एक रिएक्शन दे देती थी बीच में, बिकॉज आई वुड गेट बोर्ड ऑफ सिटिंग इन वन कॉर्नर. यार मैं काम करना है, मुझसे काम करवाओ प्लीज. सो I तो know. मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यार आई एम जस्ट सिटिंग देयर हाफ ऑफ द टाइम एंड आई वुडंट फील प्रोडक्टिव इनफ. और बिल्कुल. मेरे को ऐसा लगता था यार ये क्या बस बैठ के मैं बस थोड़े से पैसे लेके जा रही हूँ. आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर. I would rather give that time and energy to other things. Yes. So Yes. yeah, but Absolutely. I don't think I would mind going back. I've told this to Kalpesh that if you get me that old team for at least one project, you know, all those artists, मैं बिना पैसे लिए क्राउड करने आ जाऊंगी तेरे लिए सच में, you know, like that. मजा भी तो आता है ना इसमें, मजा भी तो आता है, सब साथ में होते जी ने हैं. बोला Yes. है, it's a picnic, paid Yes. picnic, but Yes. मैं paid Yes. picnic Yes. करने के लिए तैयार हूँ. I Because feel I that, remember. Yeah. I feel that, you know, there has to be some sort of organization from the supervisor and the sound designer, so that, you Yes. know, this time what she was saying, the time wasting thing doesn't happen. Also what she said was, yes, there were in 100 crowd artists there were 20 females. So what we did was we timed them in such a way that they don't Yeah. sit. We got them at a point where, because they were in selected scenes, so we got them at a point where they finish their work and they can leave, and then the males can continue, or towards the tail end of the day. So we got it. We thought of all these things, that अरे यार हम सुबह से बुलाएंगे तो then, you know, they will be just sitting and they would not be That's doing nice. anything. Not Okay. everybody thinks this way. Not everybody thinks this way. Yeah. So the sound team and the supervisor team should get onto a table before, you know, you make the calls and you put the team together and see how everyone is going to be in a little comfortable situation, because you have 20 people in a room. It tends to get a little overwhelming at times, you know, the many studios switch off the AC. So nowadays I've started selecting studios which keep the AC on Thank when you we are so doing much crowd. for doing that. So because, you know, at the end of the day everyone needs to be comfortable, you know. Right. So nowadays we are selecting studios where the AC is kept on, they have a centralized AC, so artists don't feel you know, tired by the end of lunch, or, you know, exactly. Claustrophobic. Like ये yeah, छोटी like छोटी चीजें हैं. people don't understand this. Yeah, It because is इतने very सारे लोग basic साथ कि में. Yes. इवन एक अकेला आर्टिस्ट भी जब होता है, अगर आप एसी ऑन रखते हो ना बहुत देर तक, देयर इज नो एयर सर्कुलेशन हैपनिंग, you know, so it does get claustrophobic. Right. It gets suffocating. So AC cooling से ज़्यादा ना उस air circulation के लिए important होता है, you know. Only studios would understand Right. that. Like quite a few studios who still don't have ACs, or they have to, you know, switch it off when they're recording. So yeah. Understood. So Rohit, I'd like to ask you this. आप काफी सारा साउंड डिजाइन का काम करते हैं, ओरिजिनल फिल्म्स का काफी सारा काम करते हैं, जिसमें ये चीजें डिसाइड होती हैं कि यहाँ क्राउड होगा, इतने लोग होंगे, उतने लोग आएंगे, मेल्स, Absolutely. फीमेल्स, चैंटिंग वगैरह. तो ऐसा भी कुछ होता है कि आपके पास कुछ ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड साउंड्स होते हैं जो आप यूज कर लेते हैं कि भाई मार्केट सीन है तो मैं ये लगाऊंगा, या हर बार लाइव रिकॉर्ड ही होता है ये? The problem comes when it is language specific or region specific. Like if there's a Rajasthan market, I cannot use a library. I need to get it done. But if it's a Mumbai market, I definitely then will save the time and energy and cost on bringing in, you know, unless, you know, then I want to get into specifics of name calling. Like I don't know, this is a creative call, but I've done this and it works. That many times instead of murmuring, I prefer name calling. अरे रोहित थोड़ा यहाँ से पानी लेके आ,
Madam, so when you put names to in an apartment scene or in a market scene, it suddenly gets a little personalized. You the audience gets into the narrative rather than just saying a line. So wherever I can use an ambience, I will definitely use an ambience. But when I want to get it customized, or when I want to add a narrative to it, or when I want to add maybe a, another story to it, or a language specific, then I will definitely use a crowd. I will definitely use original crowd. ओके ओके ग्रेट या सो देयर इज ऑलवेज मतलब ये तो कभी खत्म होने ही नहीं वाला है, ये तो सदा चलता Yeah, रहेगा। absolutely, ये आवाज़ें absolutely. इनकी जरूरत पड़ती रहेगी डेफिनेटली, इनफैक्ट शायद ज्यादा जरूरत पड़े क्योंकि इतनी सारी भाषाओं में अब फिल्म बनने शुरू हो गए। जनता And तो हम today the बड़ी राजस्थानी हो text, गई है, we are crowd like को what, how many of us are we, 800 million? I don't know. तो जितने लोग बढ़ गए हैं भीड़ भी उतनी ज्यादा बिल्कुल दिखेगी इतनी अब। ज्यादा यस so I feel that tech spec कोविड के today. दौर में था ना, शूट कम लोगों में हो रहा था तो बहुत कम लोग दिख रहे थे या फिल्मों में। या अब इट्स कम बैक टू अब दिख नॉर्मल, रहे, अब भरा शूटिंग भरा बबल दिख कुछ रहा नहीं, है। सब मॉडलों की शूटिंग चल रही है, तो क्राउड इज बैक Huge ऑन फिर crowds. से। Yes. हमने वो दौर देखा ना जब लोगों ने घरों में शूटिंग की, तो देयर वाज स्टोरी वाज इट वाज रिलेटेड टू अ वेरी स्मॉल फैमिली कि एक घर में हमने शूट कर लिया, फिर एक यहाँ छोटा सा दिखा दिया, एक सीक्वेंस होटल का दिखा दिया, तो वो करेक्ट। कोविड के दौरान हुआ, अब तो सब कुछ हट गया है, तो नाउ ह्यूज क्राउड्स ऑफ पीपल आर बैक कि भाई बड़े बड़े सेट लगाओ, बहुत सारे लोगों को बुलाओ। Exactly. या संजय लीला भंसाली एंड द लाइक्स आर वेरी हैप्पी अगेन। तो ऐसा कुछ विशेष एक्सपीरियंस है आपका मीना जी क्राउड डबिंग के वक्त, या कुछ आपने सुना हो या ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ जो आप हमें बताना चाहें? Yeah, I would say I learned a lot from crowd dubbings. I'll tell you a couple of instances. One is जो males के fight scenes होते हैं, I used to be fascinated to see them, the crowd people, the crowd artists doing the fight scenes. There'll be a hero, there'll be a villain, but there'll be at least 20 other people in the fight scene. Hero अपनी dubbing करेगा, जो भी डिशुम 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 है, the hero will come and do it whenever. The villain will do his, and बाकी जो दूसरे 20 लोग हैं, the crowd artists do that. So it used to be fascinating to watch them, वहाँ screen पर एक डिशुम and you're the artist, oh, they used to do it so well. I used to feel that अरे ये crowd artist ही वहाँ स्क्रीन पर है and he's performing so perfect कि जब एक घुसा पड़ा है, how he has to react, it's different from जब घुसा मार रहे हैं. So that presence of mind, because the fight scene goes on, it's not that एक किया and रुक गए जैसे कि normal recordings में होता है, you do one line and you stop, you can stop and then do the next line. But in fight sequences, it goes on for quite a long time. Stops होते हैं, but it goes on for quite a long time. So it's the presence of mind and the attentiveness of the artist to be able to give the proper reaction at the proper time. It is a fraction of a second, and they manage to do it in sync. That is a beautiful thing which I learned. Another thing is, मैं अपनी थोड़ी सी तारीफ करूंगी इसमें. When I was doing a crowd, the scene was of a street scene था, road का. So we all were just told कि ये एक रोड का सीन है, तो जरा कुछ कर देना. ठेले लगे हुए, फूड स्टॉल्स आ गए, तो कोई खा रहा है, कोई ये कर रहा है, ऐसे कुछ भी आपस में बात कर सकते हो. And since there's no script, you can say anything, because finally it will not be so audible. At least उस जमाने में ऐसा होता था. So there was one pani puri stall. So while I just saw it and I just did, भैया बहुत तीखा है, इस बार थोड़ा मीठा डालना. I just said it, जैसे हम पानी पूरी खाने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वैसा मैंने कर दिया. After we finished that scene, the sound engineer, he came in and he said that, अच्छा वो किसने किया था आप में से, that पानी पूरी बहुत तीखा है, इस बार मीठा करना. I said I. He said like, अरे that जो किया था ना, that was superb. I was so happy. So it is, you also learn to be creative. You get scope to be creative because there's no line. You're forming your own lines, your own expressions, and then when you get appreciation, you feel, oh, you've learned something.
So this was my Absolutely, yes, experience. yes, yes, yes. Amazing. ये तो है. You have to be really creative and imaginative, innovative भी. चलो अच्छा इस सीन में हम क्या बोलेंगे, वहाँ क्या बोलेंगे. जनरली कई बार मैं लोगों को देखती हूँ वो एक लाइन बोल के फिर रुक जाते हैं. फिर 4 सेकंड बाद दूसरी लाइन बोलते हैं. ऐसा नहीं होता है. So आपके तो कई अनगिनत एक्सपीरियंसेस हुए होंगे रेनू इस बारे में. तो ओ या आपने बहुत तो सारे some एंड very funny बहुत incident या मजेदार ऐसा कुछ हुआ है. एक्सपीरियंसेस. ओ यस डेफिनेटली. सो जैसे बोलते हैं ना कि क्राउड में लाइंस मैटर नहीं करती, कुछ भी बोल दो. आई डोंट थिंक इट्स एक्चुअली ट्रू लाइक एवरी टाइम, हाँ. बिकॉज कई बार अगर आपकी जैसे मीना जी ने कहा कि वो उन्होंने किया तो उन्हें इतना अच्छा लगा. सो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि आई जस्ट सेड समथिंग रैंडमली, जैसे शादी का सीन है तो हर कोई साड़ी की तारीफ कर रहा है, मेहंदी की तारीफ कर रहा है, ये वो दूल्हा दुल्हन कितने अच्छे लग रहे हैं. एंड आई एम लाइक ये न्यूडल्स अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब दिल्ली की शादी दिखा रहे हैं तो न्यूडल्स बोलते हैं वहाँ पे, तो न्यूडल्स अच्छे से लग रहे हैं ना. तो इंजीनियर ने या डायरेक्टर ने सुन लिया, लाइक ये किसने बोला था, लाइक अच्छा इसने बोला था, हाँ उस लड़की को माइक पे लाओ. तो वो अलग से वो लाइन बुलवा के हाईलाइट इट अ लिटिल, यू नो. एंड आई रिमेम्बर आई थिंक सोनम कपूर की एक फिल्म है डॉली समथिंग वेयर शी इज प्लेइंग अ कॉर्न आई गेस, एंड उसमें ट्रेन का सीक्वेंस था वेयर आई जस्ट सजेस्टेड दैट ट्रेन में गाना भी कई बार गाते हैं ना, यू नो दोस beggars who sing and ask for money. So I was like, can we try something like that? So we're like, okay. So I started singing Shirdi wale Sai Baba in those वो जो ट्रेन वाली टाइप की आवाजें होती है ना, वैसे something like हो जाए थोड़ा सा हो जाए. साई बाबा आया है तेरे Wow. पे सवारी. Okay. तो हमने एक टेक वैसे पूरा कर लिया, ठीक है. Everybody's trying to control their laughter because you know it was hilarious. Then they said अच्छा एक काम करते हैं, अब उसमें उनको फॉली भी डालना था, ठीक है. तो दे लाइक आप ना एक ऐसे रुमाल या कुछ पकड़ लो और जो बाकी के लोग हैं ना आप इसे घूमते घूमते गाओ और जो बाकी के लोग हैं उसमें एक सिक्के डालते जाओ. मैंने कहा अच्छा ये फॉली भी करवा रहे हैं अब हमसे. So we did another take where I'm actually taking money from everybody, and you know what? I kept that money for myself. I don't know because पता भी नहीं था ना किसने कितना दिया है. तो रिटर्न कैसे करोगे आप? So like हाँ ये मेरा आज का बोनस है, साईं बाबा का आशीर्वाद है ये मेरे लिए. So yeah, and also ना क्राउड में एक और बहुत प्यारी चीज होती है, आप दूसरों से देख के डेफिनेटली बहुत कुछ सीखते हो. मेरे एक्सपीरियंस में आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जानते हो, समझते हो कि ओके दिस इज माय फोर्टे, ओके आई कैन पुश माय सेल्फ टू दिस लिमिट. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लगता था कि मैं हंस तो आराम से लूंगी माइक पे, मतलब हंस तो लूंगी मैं, बट माइक पे मैं रो नहीं पाऊंगी शायद. हाउ विल आई क्राई, यू नो, हाउ विल इट साउंड रियल? I will not be able to cry. Then I remember this one time, Gulu Di Urmila Chatterjee, she's a very experienced senior artist, as we all know her, and she told me, she's like Kujju, she calls me Kujju because I'm a Punjabi, you know, raised in Gujarat, so she calls me Kujju. So like हंसने और रोने में ना एक बारीक सा फर्क है. If you can crack that, if you can laugh well, you can definitely cry well as well. And I was like, okay, let me try it. So next time एक crowd up हो रहा था और उसमें एक morgue का scene था, ठीक है. And I was like, okay, I'm going to try something. So I went in like one far corner. I wasn't right in front of the mic. आपको वो समझ भी होनी चाहिए because मैंने जो करने की सोची थी, अगर वो मैं mic के एकदम सामने खड़े रह के करती तो बहुत ही गंदा टेक हो जाता. So I went in like one far corner and I started howling. You know, like जिससे मेरा सब कुछ लुट गया है, you know, a major part of my life has been taken away because it's a morgue and somebody must have just seen a dead body of, I don't know, a family member or someone really dear, and how she would express her pain through crying. It is not just, you know, ऐसे नहीं होता है. There has to be that, आपको फील करना पड़ता है, you know, you have to put yourself to that kind of an experience. And when I did that, we all got the team inside, they were like, this was a brilliant take, you know, because there were different layers. Like I'm sure this crying added a different texture, different layer to the whole take, you know. So I learned that about myself, you know, I can cry, I can do it.
क्या बात. And Yes, you know, this has to. yeah, It's you Absolutely. some area which you probably wouldn't have explored if you were doing solo dubs. oh वो yes, मौका Correct. अरे यहीं पर मिला आपको, कि हम हाँ, कोने और में क्राउड जाके हम में, चिल्लाएं. हाँ, नहीं मिलता वैसा. और Yes. उसके बाद फिर रियल मतलब जो छोटे छोटे मेन कैरेक्टर्स भी मिलते थे, उसमें भी आई वुड बी कॉन्फिडेंट कि ये तो मैं कर लूंगी. Right. अदरवाइज मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं ये होता शायद. यस ये एक्चुअली इमोशंस वाला जो होता है ना, ये कई आर्टिस्टों को मैंने देखा है. जब आपको कोई चिल्ला रहा है या कोई रो रहा है या कोई जोर से हंस रहा है, तो वैसे ही तो हंसना है. ये थोड़ी माइक पे हो आप तो ऐसे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा. Definitely not. और पता है लाइक ऐसा बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है और कुछ लड़कियां ऐसे चिल्लाती हैं जैसे मतलब एंड इससे ज्यादा जोर से तो कॉकरोच दिखने पे चिल्लाएगी, ठीक है, या बम फटा है. You know, so you have to give that crack in your voice. And I think I owe a lot for all of this also to Mona Di. She's been a brilliant mentor to me, and obviously the team at Sound and Vision back then, who constantly kept guiding me, and obviously the other senior artists जिनको देख कर मैं सीखी हूँ, you know. And आप दूसरा कंटेंट देखकर भी सीखते हो. राजश्री जी गायब हो Absolutely. गई हैं हमारे So मॉडरेटर. we'll continue talking. We'll continue talking. Yes, yes. I feel that, you know, for effort tracks, I have a small trick in my bag, which I carry a resistance band. So many new artists, as you said, that, you know, they are not good with putting out effort tracks. I mean, you know, hello. Yeah. Is so what I do is I carry a resistance band, and this any artist can do. So when you just scream, it will be a very unnatural scream. But when you pull the resistance band and scream, it will be a very natural scream on the microphone. The one So that you- we use for physiotherapies, वो वाला. Yes. So that is Oh, what yoga, is in my yoga. bag when I But- do throat conference. But Rohit, that's the beauty of actual artists. हमने ये सारी चीजें बिना in We don't Exactly. use props. We don't Absolutely. use We use our props. body, Abs- like Meena ji Yeah. said, we use our imagination. Yes. Yeah. Exactly. This is for that is only for new artists who have maybe come for the first time First. and they don't know, you know, how to give a effort track. कैसे चिल्लाना है, कैसे रोना है, like you just said. Then you know that is a workaround. तो That कैसे रोने का कैसे वर्क अराउंड है, जैसे चिमटी काट दो उसमें से जाके. थप्पड़ मार दो. रोने का तो अभी तो रोना ही पड़ेगा ना उनको. जोर से tension- रोना ही पड़ेगा और Payment Just- आएगा, just दो put साल them under बाद some भी pressure. शायद रो देंगे. put them under some pressure, they'll automatically start crying. हाँ, Tell them you won't get your money. But there's- पैसा नहीं मिलेगा आज. They'll start crying. रोना चिल्लाना उसकी बात हो गई. बट व्हाट अबाउट द सिंग? जब रोहित, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब चैंट्स होते हैं जैसे जिंदाबाद जिंदाबाद ये वाले जब शुरू हो जाते हैं, तो उसको हाँ. सिंक में आप कैसे करते हैं? यानी एक हम जब फिल्म देखते हैं तो हमें तो सब एक साथ ही सुनाई दे रहा है, बट हमें पता है Exactly. कि उसको एक साथ बुलवाने में कितनी तकलीफ होती है. So there's a workaround. So it depends on how it is shot. So if the Zindabad is the principal photography comes into action here, that if there's a master shot, you actually can do away without syncing it. If just one of the artists sings, if the first in the row, if we can bring them to sync, you know, हाँ, just हाँ, one हाँ. of them, then everything else, the audience will not go into if the 10th one was in sync or not. Just one or two. So again, it depends on how it has been shot. If it is a close up, then they will have to sync. No, but If it is specifically a- for recording आप कैसे करेंगे? जैसे आप 1 2 3 काउंट देते हैं, अब बोलिए, वो कैसे एक Yes. साथ सबका कैसे सुनाई देता है? Yes. So earlier, there used to be markers on the screen. So there used to be 1, 2, and 3, and then you start. Normally, now what I do is I put that. I told you about the pilot track. In that pilot track only, I have a 1, 2, 3, and you go. Normally, and today with the technology that we have, syncing is not a problem. To be very honest with you, syncing is not a problem. In a couple of takes, they will come to a point where they will sync. Yeah, because it's like about 10 or 20 people अगर एक साथ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही साथ शुरू करें बोलना. पहले कोई दो Absolutely. लोग शुरू करते हैं, फिर दूसरे ज्वाइन करते हैं, ऐसा होता है ना? One or two rehearsals, and I think everyone will come into that whole thing of, you know, I recently did a series, Dahan, which is on Hotstar. So that for that we required
crowd artist to do zombies. So Oh, that was हाँ something मैंने very zombie के लिए कभी different. नहीं किया. हाँ ये रह गई एक चीज. okay. So, हाँ so sorry. no one had a reference. So we had a trainer who trained them in zombie voices, and I really hats off to everyone in the crowd. There were new faces. There were some seasoned crowd artists. Everyone, the whole afternoon they were doing just zombie voices. And if you just look at the series and take that layer out now, or try to mute it in your head, you will Hmm. know that, oh wow, this is such a beautiful creation. This is so much hard work that has gone into creating this small things, which was not possible if there was no crowd team. There's no machine that can recreate a zombie walking on a street. No, there's no sound effect laboratory which can do that. It is only a good crowd team. Only a good crowd team can do that. Hmm. So, this is the technical aspect. Do you think, Meena ji, we should start labeling them differently? कुछ हमें अच्छा दूसरा नाम सोचना चाहिए crowd dubbing का. जो सब लोग crowd dubbing बोलते हैं. अब वो Paid I बदनाम don't हो know. चुका I है. don't मुझे know. ऐसा लगता है, क्यों पता नहीं बदनाम? क्यों. I don't know पता क्यों नहीं Exactly. क्यों. badnaam. See, there Absolutely. is one detergent which has tagline दाग अच्छे हैं. I say the same thing for crowd dubbing. Crowd dubbing अच्छा है. Right. Crowd dubbing बहुत अच्छा है. It is a Absolutely. wonderful platform where newcomers can come in and learn things because it's a mixed crowd where there are seniors, where there are experienced people, and there'll be some newcomers. So for newcomers it is a wonderful entry, wonderful step to learn. So crowd dubbing क्यों बुरा है? I don't know. I don't look down upon crowd Absolutely. dubbing. There is no film which can do without crowd. Absolutely. I can't remember. I was just thinking yesterday, is there any film? I could just think of one Hindi film, Kaun, Urmila Matondkar. Yes. Huh. I think that film may not have had crowd because it was entire film was about her and Shayad do teen, I don't remember now, I've seen it years back. So Shayad that film may not have had crowd. But other than that, there is no film which जिसमें ना हो. whether India में और Hollywood में जिसमें crowd ना हुआ हो. Crowd is an integral part of a film. So crowd dubbing is an integral part of dubbing. It's Absolutely. one wonderful thing जहाँ कुछ ना बोल के भी you are saying and performing. It is very difficult to perform where there are no lines. There is Yes. no nothing. It's actually like blind dubbing. कुछ नहीं है वहाँ पर. शायद आप सुनाई नहीं देंगे. That is the beauty of it. That you're delivering for something which is actually almost non-existent. अभी एक street scene. कोई lady pass हो रही है walking with her child. And you just think, you must say that, अरे बेटा थोड़ा side में चलो. These things are Makes so a small, difference. but they are so important and so Makes a beautiful difference. to बिल्कुल. make a film. Absolutely. All sorts. Absolutely. It takes all so sorts agree. of characters to make a Yes. film. So Absolutely. from a food lover's point of view, I look at crowd as salt in food. अगर क्या थाली में नमक नहीं होगा, आप कितने ही मसाले बढ़िया डाल लो, बढ़िया इंग्रेडिएंट्स यूज कर लो, बिल्कुल, नमक बिल्कुल. के बिना स्वाद Well said. नहीं आएगा. Yes, absolutely. Yes, और इसके कुछ absolutely. फायदे भी तो हैं रेनू. जब लोग शुरुआत Exactly. करते हैं, इसके फायदे हैं कि at the end of the day you get paid sometimes immediately, या इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ता जितना रेगुलर आर्टिस्ट को करना पड़ता है. And also And when you're a income हो जाती है. newcomer, Rajeshri, I'll just interrupt you. When you're a Yeah. newcomer, you don't know how to stand in front of the mic, how to Yes. speak your lines, where to look. At that time, you don't know that you have to keep your face a little stiff. And at the same time, your expressions, like people tell me, my God, your eyebrows go so high when you talk. But then my face will be stiff because I know I have to speak into the mic. थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वो ब्लो आएगा, लेवल नहीं मिल रहा है, ये सब आ जाएगा. So you Right. learn all these things in crowd. You know where to stand. They'll explain to you well, which after a certain point people don't have time. Sound engineers may not have time to tell you, yeah, ये words में blow आता है, तो you have to tilt your face a little. You get to learn all these when you're seeing others, when you're observing, provided you are a good observer and a good learner. Right. You have to be these two. Exactly. Absolutely. The You have to willingness have that passion
passion And to then there learn. was something very nice which even I like to share, because I have also been, believe it or not, part of one of the crowd dubbing sessions. और उसमें ये Oh, था, yes, बिल्कुल, they called, they asked कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर मूवी में हमें इंग्लिश वाला चाहिए, तो आप क्राउड डबिंग में शामिल होंगे क्या? तो मैं सेड हाँ बिल्कुल शामिल होंगे. इट वाज डन एट आराधना एंड इट वाज फॉर द मूवी सुर, जिसमें आई Okay. आल्सो oh पार्टिसिपेटेड इन wow, अ क्राउड डबिंग सेशन. यस, Nice. फॉर द होल Okay. डे. nice और movie. उसमें मेरा बोनस एक मिला मुझे कि वहां पर जो लेडीज थी वो मेहंदी लगा रही थी. कैन यू बिलीव इट? Wow. अपने फ्री टाइम में यस, वो बैठी थी एक चेयर पे और वहां पर लोग जाके लड़कियां जाके मेहंदी लगवा रही थी, तो मैं भी लगवा के आई थी. Wow. that was real She bonus was one of icing the on the cake. मतलब she was an artist. वो भी क्राउड डब करने ही आई थी, बट जैसे मेल्स का चल रहा है तो ये लोग चले गए अंदर वहीं पर कोने में और फटाफट लगवा लिया. मैंने कहा ये हो क्या रहा है? तो मैं पास जाके मैंने देखा, मैंने कहा तो मेहंदी लगाई जा रही है, फटाफट हाथ आगे कर लो. बहुत अच्छा टाइम पास. जैसे सरकारी दफ्तर में सीरियल्स में दिखाते ना, मटर निकाल रहे, स्वेटर बुन रहे. So yes, यानी ये कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप सोच भी नहीं सकते. सोचा ही नहीं था कि कभी रिकॉर्डिंग करते हुए मेहंदी लगेगी हाथ में और स्टूडियो में बैठे होंगे और ये चीज चल रही होगी. So it's छोटी छोटी चीजें, ये एक्सपीरियंसेस जो कभी भुलाए नहीं जा सकते. Absolutely. दिस इज वन थिंग आई से कि न्यूकमर्स आते हैं तो हम भी कहते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आके पूछते हैं, तो हम कहते हैं क्राउड से शुरू कर लो. अब तो लोग खुद भी बोलने लग गए, वो जान गए कि ये क्या चीज है, तो कहते हैं हमें क्राउड में बुला लीजिए, एक दो लाइन के लिए बुला लीजिए. फिर उसमें जब कुछ प्रोमिनेंट लाइंस डब होती हैं तो पता चलता है कि अरे हाँ, जैसे रेनू राइटली सेड, ये किसकी आवाज है, जरा सामने आइए आप. तो पता चलता है ओ इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, इसकी आवाज ऐसी सुनाई देती है और ये बोल भी लेता है ठीक से, तो चलो इसको मार्क करो, वी कैन ट्राई हिम फॉर बिगर रोल्स. क्योंकि इवेंचुअली सबको करना है, कुछ ना कुछ मेजर रोल करना है, दे वांट देयर नेम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, सब इसी के लिए आते हैं. तो दैट्स नॉट समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन कि ये क्राउड डबिंग कुछ बहुत ही बुरी चीज है, ये क्या चीज है. इसमें लोग इकट्ठा जाते हैं, चिल्लाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं है. उनकी भी लिस्ट बनती है. I swear, those people, oh my god. मुझे तो बहुत खुंदक आती थी उन लोगों पे. I I know, would वो actually- खड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और फिर ऐसा लगता है आप क्यों आए हो जब आपको And बोलना I ही used to नहीं. be like a teacher's pet, जाके मैम तो डबी नहीं कर रही, कब से खड़ी है, बस बैठी है, क्या है वो. जब भी हम चिल्लाने का टेक करते हैं तो बस वैसे मुंह ऐसे कर लेती, पर आवाज नहीं आ रही है उसकी. आवाज नहीं आ रही है. And I'm sure ये लंच के बाद के सेशन में ज्यादा होता है जब लोग थक पहले जाते भी हैं. कुछ लड़कियां नहीं, because they want to save their voice or what, I don't know, but they wouldn't. And उससे क्या फर्क पड़ता है ना, जैसे अगर रिक्वायरमेंट है 5 लोगों के चिल्लाने की, अगर 4 लोग चिल्ला रहे हैं, I guess Rohit will understand this, the power reduces. It's gone. Yeah, you know? absolutely. तो या तो आपको रीटेक देना पड़ता है, या फिर उन बाकी के 4 लोगों को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है. राइट, Which is unfair. पांचवे का कवर करो. राइट, हाँ, which is really unfair. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. True. और ये so when you're I recording in yeah, no, please continue, Rohit. Yeah, I feel that this can be solved with planning and organization. Again, if you can sit with the supervisor, and if the sound designer and the supervisor are in sync and they know what they're doing, and they know that we need to call artists, only artists will be performing, and we need to select a good section of artists, be it new, somewhat experienced and good experience, then that planning will only help. Because wherever I have walked into crowd sessions unplanned, I know it has been a disaster. It is Chaotic. Yeah. And where I have not spoken, or I have not been introduced to the supervisor, or I have not been able to tell them the brief of the film, I have myself experienced complete chaotic disasters. Like everything has been scrapped. पूरे 2 दिन का काम scrap भी हुआ है. I have been into those situations, and over the years I've figured out a ecosystem, I may call it, or maybe a way of working, that I make it a point to first make that pilot. Secondly, speak to the supervisor and show him or her the film. भाई ये हम कर रहे हैं. This is where I need these specific crowds, and many times I also speak to the VFX supervisor. Now, why VFX supervisor?
There are times when I see the final movie with the VFX, 500 के 5000 हो जाते हैं, या Oh my God. many हाँ. times 100 के 1 lakh हो जाते हैं, and now you have just called 20 people. So ideally, my whole calculation is, if on screen you are going to show 50,000 people, I at Hmm. least need 50 people in the studio. So Absolutely. तभी वो मजा आएगा. Hmm. otherwise the impact will be completely as good as किया ही नहीं है crowd. To be very honest with you, हाँ, I mean कितना you भी DT कर लो आप, वो नहीं आता है, वो इफेक्ट आता ही नहीं है. Right. again DT with so many people technically doesn't work, to be very frank with you. Technically it phases and cancels. So ideally have more people so that you don't have to do DT. Yeah. Like So okay, for people who don't know DT, here हम DT बोल रहे हैं. DT का मतलब है double track. हम Double उसी track. चीज का दोबारा करते हैं, उसको कहते हैं double track. Yeah, please continue. Yeah, so many times what happens is, if there are 4 people, these people can do a DT. ये DT ये हो सकता है. But if there is a crowd of 50 people or more than 10 or 20 people, I highly recommend, do not get into the unless you are doing in a very cramped up studio where you can only accommodate 5 people. Okay, then it's a different story. But otherwise, with too many voices, because with DT, if it is not matched, if everyone doesn't have a headphone or a playback, it will never be a good DT. It will always be unusable. So and that also tires of the artist. So what I do is I reduce the number of artists. So what I'll do is 2 males and 2 females, and I'll get them DT to do certain sections of the crowd. Where I need like the proper impact, I will have the crowd do like, okay, you give more energy. This is what I tell them कि एक ही बार करो पर पूरे एनर्जी के साथ करो, तो वो it will work then. Right. So that's how I look at it. What is the You know, Rajesh shortest? ji, हाँ जी sorry, बोलिए. sorry. No, I please, just remembered one point. Yeah. I don't know अब अगर ये लागू होता है, but पहले कई साल पहले, generally we are talking about DT, how they duplicate and all that. So उस जमाने में कई साल पहले जब मैंने crowd dubbing किया था, that time they used to take one take, कि आप एक टेक ये पार्टी सीन चल रहा है, एक टेक कर लो. आफ्टर दैट दे यूज्ड टू से चलो अभी सेकंड टेक करेंगे. मतलब क्या? मतलब कि आपने सपोज मैंने एक लाइन बोली है फर्स्ट टेक में, एंड आई वाज लाइक से माय ओन एज, सो आई विल से दैट अरे पार्टी में बहुत मजा आ रहा है ना, तू कल आएगी क्या, हम कल वहां जाएंगे शॉपिंग के लिए, ऐसा कुछ मैंने बोला है. अभी सेकंड टेक करना है, दैट मीन्स यू हैव टू मॉड्यूलेट योर वॉइस. यू कैन नॉट स्पीक in a similar, you are performing another person now. जो Right. आपने ऑलरेडी किसी लेडी का कर लिया है, अब आप किसी और लेडी का करेंगे, तो वो आप कैसे करेंगे? you'll have to modulate your voice, you'll have to Right. change your voice. नहीं तो लगेगा अरे ये आवाज ये भी निकाल रही है सेम आवाज भी और वो बोल भी रही है, सेम वो भी आवाज. बोल रही है. तो you learn to modulate also. So then second you find some little maybe an older or a younger person and you put in a little bass and अरे बेटा मुझे जरा समोसा दे दो. You could do that. So you learn to modulate also. You learn to modulate your voice through these things. Absolutely. Yes. So well said, Meena ji. Yes, definitely. Yes. Also, I'd like to ask this to Renu कि have you met with a situation जहाँ पर आपको अभी realize हुआ कि भाई crowd कराना है और लोग हैं नहीं और आपको अभी करना है वो, तो अब आप क्या करेंगे? जैसे 2 लोग हैं तो पता चला आप ही हैं और कोई और है और अभी ये करना है. This is what lockdown was. I think Rohit is in a recent experience situation. But yeah, ऐसा होता है, especially at times new prints आते हैं जब भी किसी फिल्म के या सीरीज के, रिसेंट की ओके दिस इज अ न्यू प्रिंट नाउ, एंड उसमें कुछ सीन्स होते हैं एडेड, तो भी एक आध अगर सीन है, छोटा सा सीन है, तो यू डोंट, इट्स लाइक यार अभी इसके लिए क्राउड एंड अर्जेंट है. हाँ तो इट्स लाइक अच्छा स्टूडियो में जो है किचन स्टाफ या जो भी है सब करते हैं एंड सबसे कुछ ना कुछ तो करवा लेंगे, लाइक हो जाएगा. सो अगर मैनेजेबल होता है, लाइक इफ इट्स अ स्मॉल बेसिक सा सीन तो ठीक है, बट यस अगेन लाइक इफ इट्स लाइक अ फाइट सीन और समथिंग, देन यू हैव टू कॉल पीपल, देन देयर इज नो ऑप्शन. फिर आप ढूंढते हो भाई कोई तो आसपास हो, या ठीक है लेट आ जाओ या व्हाटएवर, लेट्स स्टे बैक एंड लेट्स फिनिश इट, स्टफ लाइक दैट.
Okay, Rajeshri, yeah. just continue this. After this point, I'll say something. नहीं बोलिए Finish ना कर लो, प्लीज। finish. You know, I was just thinking, तुमने मुझसे पहले पूछा कि people look down upon crowd dubbing. Why? I have not understood who says this. Why they say so, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आज I think I can say with confidence that जितने आर्टिस्ट हैं अपनी जितने वॉइसिंग आर्टिस्ट हैं एंड दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन डबिंग्स चाहे फिल्मों के, चाहे साउथ की फिल्म, चाहे हॉलीवुड फिल्म, चाहे आजकल तो आई डोंट नो टर्की एंड कहाँ कहाँ की फिल्म्स एंड शोज डब हो रही हैं. तो जितने वॉइसेस हम इस फील्ड में हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्राउड डबिंग किया है. आई डोंट नो, डू यू थिंक किसी कोई आर्टिस्ट है जिन्होंने क्राउड नहीं किया होगा? आई डोंट नो मीना जी, आई विल से कई लोग होंगे जिन्होंने क्राउड डबिंग जैसे तुमने कहा तुमने भी एक किया है, एक फिल्म की है तुमने भी, मैंने 3-4 की है. यू नो, सम मस्ट हैव डन मोर, सम मस्ट हैव डन लेस, बट आई थिंक एंड वी हैव ऑल, हम बाय गॉड्स ग्रेस हम क्राउड डबिंग के अलावा, आई मीन क्राउड डबिंग के बाद हमने अपना यू नो मुकाम हासिल किया है. वी हैव रीच्ड प्लेसेस, वी हैव डन अ लॉट ऑफ good work. So how can you look back and say that this is not a good field, or look down upon crowd dubbing? Why is anybody doing So that? Nobody should do that. I think somewhere I know a reason behind this. It could be a reason. जो ओरिजिनल फिल्म्स हैं जैसे बॉलीवुड स्पेशली, उनका डबिंग का बजट नहीं होता है, क्राउड का तो बिल्कुल ही बजट नहीं होता है, ठीक है. एंड देन at times the coordinators that they hire for sourcing artists, what they do is, it is really sad, but they will get, maybe if there is a crowd of 30 people, they will get 5 experienced artists, like good artists, and the others might be their students, or I don't know, just people they met at a party, and or people like जिन्होंने उनको कॉल कर लिया कि हाँ हमें ट्राई करना है, kind of a thing. तो उससे क्या होता है ना, वो जो quality of people working there in that session, that kind of gets affected, and that affects the product as well to some extent. That is one of the things. The second thing is obviously इतना आप time और effort डाल रहे हो, but उसके return में आपको जो payment मिलती है देखा जाए तो it is pretty less. Like shift wise भी जो payment होती है for crowd dubs, like it is, we all know that it isn't as much as I would make if I dub for a character for 5 hours in a studio, obviously, ना. Yes. मतलब 1 घंटे में भी शायद मैं उससे ज्यादा कमा लूं जितना मैं right, but 8 I घंटे still crowd say dub it is, करके. But it's a learning but experience. yes, very much. Also, It is a stepping stone. उनके लिए एक सस्टेनेबल इनकम भी तो है. Yes. कि आप एक शिफ्ट में भी काम कर रहे हो, अगर आधी शिफ्ट में कर रहे हो या पूरी शिफ्ट कर रहे हो, तो यू आर पेड अ डिसेंट अमाउंट फॉर द एंटायर शिफ्ट, फॉर द एंटायर डे. एंड आपका रेज्यूमे बनता है दैट आपने इस फिल्म को डब किया, इस फिल्म में यू कैन यू. And आजकल तो luckily production houses are really kind that they've started giving, lot of them have started giving our names in the credits, especially crowd Very artists. important. So Yes. That's a brilliant change that is happening. Huge plus point. Yeah. Yes. So हाँ, मतलब there is scope, there is hope, and हाँ आप वहाँ से निकलोगे बनके तो. I feel I have a point here. I feel let's go back in time when maybe Meena ji was doing the crowd. That time it was just the artists. It was artists who were doing crowd. कहीं से तो There was ये no आ गया. technology. There was no Yeah, technology. Also, there were no. What I mean to say, there were dubbing artists who were doing crowd. Renu, no offense here, but even I have been into this situation where the production head says कि हमारे office boys बुला के हम लोग crowd कर लेंगे. And many times I've been the one to put my foot down. I said no, because what that does is that starts a narrative that ये तो कोई भी कर लेगा. Right. ये हम हमारे चाय वालों को भी बुला के ये कर सकते हैं. Okay, in a do or die situation, once in a while, okay, ठीक है, चलो एक आर्टिस्ट को आपने बुला लिया. That is what I was talking about. That, like I obviously हर project में नहीं किया है वैसा. Exactly. But it's like urgent delivery है and basic. Absolutely. है तो Once in a while, but that narrative needs to be
to be not to be encouraged, because there are productions who say हमारा office staff कर लेगा crowd, आप मत बुलाइए Right. artist को. Oh, is it? Right. Yes, which is you know, which, and I'm saying this openly on this platform because we need to put this out that no, this cannot be done that way. There are artists who will do it. We will give it to a crowd supervisor. We will see to it that a group of artists is coming to the studio and doing it. It will never be हमारे ऑफिस के बंदे, हमारे प्रोडक्शन के बंदे. Agreed. आप सेट पे तो ऑफिस के बंदों को नहीं बुलाते ना एक्टिंग के लिए. Correct. Right. So, Right. so I think I'm putting this out because this is also a narrative. This is also a way out for a lot of productions, and I feel we as artists, we as established artists, we as coordinators, we should put our foot down that no, this we will not allow this. We will call in a new artist. हम एक नए आर्टिस्ट को बुलाएंगे. हम एक आर्टिस्ट को ही एक आर्टिस्ट से ही ये करवाएंगे. And I Agreed. feel Yeah. It's a earlier, nice message. yeah, Very nice absolutely, message. this has to go out because there is this narrative which is getting popular that ये तो कोई भी कर सकता है. ये हाँ, तो वो but dubbing, then overall dubbing के लिए भी बहुत लोग, like I'm sure Yeah. मीना जी gets calls और राजश्री मैम also gets calls at times कि अच्छा हमको ये एक 2 लाइंस है प्रोमो के लिए करनी है, then you quote a budget or whatever and then they like अरे आपको 2 लाइनें ही तो बोलनी है, उसके लिए इतना बजट, and then you come to know, they tell you कि हमने ऑफिस में ही किसी से करवा ली, करवा you know, दिया. like for Yes. IPR or that तो narrative needs to go. That you know that is a narrative that needs to be taken care, and because we all are artists. Everyone in this frame is an artist, and when there's someone who just says that okay, ये तो this can be done by my office boys. 3 girls and 3 boys will come from my office and do it. I feel that needs to stop completely. It is a professional job. Let us put a professional tag on to every crowd artist's name so that he and she also feels, oh wow, I'm a professional, and Yes. let them just go out and have a good time. And if Absolutely, those no, office there girls are- and office boys are brilliant, no, I'll ask them to become artists. क्या काम कर रहे हो यार? Artist बनो यार. Actually, each artist should be proud of themselves, proud of their work. If Absolutely. they themselves feel कि crowd dubbing, you know, is lowly and all that, तो फिर दूसरा कैसे आपको इज्जत देगा? Exactly. It's It about is True. you who have to appreciate your art, appreciate your talent, and True, absolutely. have confidence in yourself that you're doing a good job. You're doing a wonderful job. जैसे Absolutely. राजश्री जी आपने सस्टेनेबिलिटी की आई थिंक बात की थी ना कि आपकी एक सस्टेनेबल इनकम हो जाती है. आई रिमेंबर व्हेन right. आई हैड स्टार्टेड डबिंग फुल टाइम, ऑल आई यूज्ड टू डू वाज क्राउड डब्स. तो इनिशियली जैसे हफ्ते की एक आ गई, 2 आ गई, फिर धीरे धीरे आई रिमेंबर दिस 1 month I had 1 crowd dub every day of the month. So 30 days I did crowd and I was like wow, इस महीने रोज crowd किया है मैंने, and I was so happy about it कि मैंने crowd रोज किया है, you know. When I look back at that, I'm like, dude, मतलब तू रोज crowd करके खुश रहती थी. Simpler times. So do you ever want to go back to those days कि हाँ भाई वो दिन दोबारा आ जाए? At times I feel like, but like I said, I would prefer that team also, no, कि, you know, like I would like to do it with people who are passionate about the craft, who don't just come कि कुछ नहीं है तो चलो चलते हैं, you know. So Absolutely. most of the times when we हम भी अगर बुलाते हैं तो हम किसी एक को पूछ लेते हैं कि तो वो सामने से पूछ लेते हैं कि कितने लोग चाहिए आपको. So हाँ. 3 से 2 या 3 लोग चाहिए, so दिल से अच्छा मैं बोल दूं इनको भी मैं ले आऊंगी हाँ, 2 लोग या हाँ, मैं 3. हाँ. तो वो अपने अपने फ्रेंड्स को या ऐसे किसी रेगुलर जिनके साथ काम करते हैं उनको ले आते हैं काम करने के लिए. Correct. उसमें ये होता है कि वो आपसी बातें भी करते रहते हैं. तो इस तरफ Gossiping भी हो जाती है. जब हम सुनते हैं तो कई ऐसी चीजें सुनने को मिलती है. अच्छा ओह अच्छा तो इसकी लाइफ में ये चल रहा है. अच्छा कल रात को इन्होंने बहुत पार्टी की, ओहो तभी इतने क्लिप्स आ रहे हैं. अच्छा. So that is something very amazing about crowd dubbing sessions. The energy, the vibration. अगर आप स्टूडियो Absolutely. में भी जाओ जोर के ठहाके और लंच के वक्त तो ऐसा लगता है कि भाई ये कोई महफिल. कोई पार्टी, हाँ कोई महफिल जम रही है या कुछ ऐसा हो रहा So है हम- कि भाई ये भी थोड़ा सा
आई रिमेम्बर क्राउड में जब भी लंच ब्रेक होता था या नाश्ता ब्रेक होता था शाम का, तो हम बोलते थे चलो भाई जो जो मेन काम करने आए वो कर लेते हैं, खा लेते हैं. That's why I called it a paid picnic. Picnic है Yes. total. सुबह नाश्ता, फिर थोड़ा सा काम कर लो हंसी मजाक में, then lunch time, फिर उसके बाद थोड़ा सा men will go out to smoke and all that, फिर थोड़ा सा काम कर लो, फिर snacks आएंगे, समोसा वमोसा चाय कॉफी. It's a paid picnic. Paid picnic. बिल्कुल बिल्कुल. और बातें जो एंडलेस बातें हैं, वो Gossiping, बातें हाँ, कभी खत्म नहीं होती. gossiping and मस्ती मजाक, that is another thing. So, any advice to the newcomers जो अगर अब जिन्होंने हमारा ये डिस्कशन सुना है और जो सोच रहे हैं कि अब हम क्राउड डबिंग से शुरुआत करेंगे, कि चलो हम इससे शुरू करेंगे, तो एनीथिंग फॉर देम? मीना जी आप शुरू कीजिए, कुछ आप कहना चाहें. हाँ, मैं ये कहूँगी दैट ये बहुत अच्छी फील्ड है. वो पैशन होना चाहिए, वो लव होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए सीखने के लिए. एंड डोंट लुक डाउन अपॉन इट, डोंट लुक डाउन अपॉन इट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आप आइए इसमें. मैं इतना भी कह सकती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल हु आर रनिंग क्लासेस, यू नो, सिखाते हैं आर्टिस्टों को, दे रन क्लासेस, सब कुछ सही है, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट crowd dubbing is like hands-on training. Absolutely. You know, you're there, you're in front of the mic, in front of the screen. जो आपने सीखा है वो सब अब लागू हो जाएगा. You will is practical knowledge. It's practical. You know, you're applying whatever you've learned in your classes, in your Absolutely. course, and doing it now. You're getting an opportunity to stand in front of the mic, जो easily नहीं मिलता है. People. बिल्कुल. Time pada hai, you know, if they want to call veteran artists, they can call veteran artists and get the work done, but they are allowing you to come and use this as a platform to learn. आप उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्टि रखो, that, and don't run after money कि मुझे पैसा उसी दिन मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा. No, you're come here to become an artist, learn the ropes, learn your art, then think about money. Money will follow. कोई भी फील्ड हो, money तो आएगा ही. Allow money to follow you. Don't run after money. Allow money to run after you. I feel that way. And crowd dubbing, दाग अच्छे हैं, crowd dubbing भी बहुत अच्छा है. So well said. Wow, well said. क्या बात है. Absolutely. अब what about you, रेनू, आप क्या कहना चाहेंगे सबको? So मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के दम पे कहूँगी कि क्राउड डब हेल्प मी बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. इट so being a Punjabi, I was used to speaking on a very high pitch because मैं stereotype नहीं करना चाहती हूँ, but in most of the Punjabi households we are used to listening to our elders at a very high pitch, and that is what we start doing ourselves as well. So it is through crowd dubs that I started understanding कि okay मुझे अपनी pitch को control करना है. Though I was told by somebody earlier, but मुझे समझ नहीं आता था. तो जब मैं क्राउड डब्स करने लगी तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ओके अपने को पिच थोड़ा यू नो नॉर्मलाइज करना है, बहुत ऊंची पिच पे बात करना है. एक वो चीज़ समझ में आई. सेकेंडली इट हेल्प्ड मी बिल्ड माई कॉन्फिडेंस टू होल न्यू लेवल. आई रिमेंबर पति अय्यार हैड सेंट मी फॉर एन ऑडिशन वेरी इनिशियली टू एम्पायर. That was my first ever audition. And I was so nervous. It was for sure in the city. And like I was trembling, I was sweating. और वो एम्पायर के दरवाजे इतने मोटे, वो मुझसे ना खुले. And I was like, oh God, where am I, you know? And like I just wanted to run away from there. I was so scared and nervous. But crowd dub helped me build that confidence in myself. That even if I would go to new studios and there would be all strangers around me, I would be confident enough to perform in front of the mic. I would know what I'm doing. So crowd dub definitely helped me with that as well. And obviously जैसे आपने भी बोला networking तो है ही, and it has actually a lot more benefits. Like I can go on and on about crowd dub seriously, but yeah, maybe you can start with this. But having directed a session, do you have something to say about that aspect as well?
yes, as a director, I think it is very important to be prepared along with your engineer, like Rohit also said, to know कि आपको कहाँ crowd चाहिए, किस टाइप क्या का लेना crowd किस scene में चाहिए, हाँ, हम्म और आप कैसे plan करते हो, like I think mostly people do this कि पहले आप lines ले लेते हो, छोटे-छोटे dialogues ले लेते हो, then आप वाला लेते हो, murmurs and all, and then you keep the screams and loud reactions and all for the end. ताकि आर्टिस्ट की एनर्जी ड्रेन भी ना हो और उनकी आवाज भी अफेक्ट ना हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर होमवर्क and also to call the right kind of people for the job, you know, because that will not only make it easier and smoother for everybody, but also the output will be good. तो रेशियो न्यू एंड एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट का आपको बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर 20 आर्टिस्ट आपको चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 नए और 10 एक्सपीरियंस को बुलाओ, नहीं, आप 5 नए आर्टिस्ट को बुला लो, बुलाओ, 15 एक्सपीरियंस को बुलाओ, you know. yes So, तो yeah. इस तरह से they'll get trained in the process. Yes. Yes. What about you, Absolutely. Rohit? आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, I mean, something what the Brits taught me was always carry your visiting card. You know, Ah, new artists can benefit from this, that they go to a studio, they go to different studios for crowd dubbing. They just have to leave their card or a demo that I am a solo artist also, I am doing this also. So for one thing, yeah, networking, but networking at the right places in the right way. So I feel that, you know, budding artists can take this as an opportunity to just give their card or maybe a CD or a pen drive, or you know, send their samples over on the mail to the studio. So when they visit the studio, they unknowingly, a door is opening for them. Unknowingly, it is not that मैं crowd करने जा रहा हूँ यार, क्या हो सकता है, but unknowingly a door of opportunities is opening for them, and if they look at it from that point of view, they will never ever look down on this whole thing that we won't be discussing that. So one thing is that. Secondly, you know, looking at seniors and looking at seasoned artists and observing them will teach them a zillion things. I mean, you know, if as an engineer I was in a session where Meena ji was performing, I will learn 100 new things from her as an artist. So if right. there's a new artist who is in the studio, I think there's so much to just observe and absorb from seniors. That is second, and I think third is just giving your uh, art, or you know, your talent a opportunity again. You know, many artists, you know, they restrict themselves ki, you know, in the beginning, that I will not do this because this is something that they've already made conclusions. But if you give your art an opportunity, I think there's a lot to gain. So I mean, this is what it is. I would like to add something Also from an artist's point of view, yeah. that yes, we learn what to do Yeah. from others. We also learn what not to do in a crowd dub Absolutely. session. That is also equally important. Like I know Absolutely. certain experienced artists who will keep the phone on ringer mode during crowd dubs, and it is very irritating, especially during takes where the guys are, you know, yelling, screaming, and this person's phone rings, and they will also start speaking, you know, and be very unapologetic about it. So I learned कि ये नहीं करना है, ये नहीं उनको करना। हमेशा साइलेंट पे रखना है. आप थोड़ी देर बाद, मे बी 1-1.5 घंटे बाद, या जब आपके ब्रेक से आप जाके चेक कर लो फोन किसी का है तो कॉल बैक कर लो, यू नो. एंड कोई और टेक कर रहा है तो बीच में खुसफुस नहीं करना है. थोड़ी देर के लिए, यू नो, अपने अंदर की गॉसिप क्वीन को कंट्रोल कर लो, चुप कर लो, टेक होने के बाद कर लेना जो भी है. सो these things, they are very basic, but at times people don't realize that. Also one very important thing in crowd dubs, especially क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इतने सारे लोग होते हैं, AC on रखना पड़ता है. Some people's bodies, they start feeling cold. So in crowd dubs, if you're going, you must carry a shawl or a jacket and a pair of socks. Yes. Because Yes. AC off नहीं कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता. You know, so as artists, please carry your jackets, shawls, socks, whatever keeps you warm. कंबल, दोहर, जो लेकर जाना लेके जाओ. But AC off नहीं होगा. You know, Renu, I'll add one more thing. आप जी. क्राउड डबिंग जब करते हैं, आप एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सीख जाते हैं, बिकॉज इन दैट वन रूम दे में बी यू नो एटलीस्ट 7-8 लोग होंगे ही.
तो जो 2-4 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी बैठे हैं. यू नो, समटाइम्स यू गो आउट, आप डबिंग रूम से, डबिंग स्वीट से बाहर निकल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहीं पर बैठे हैं. तो यू लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड यू नो नॉट, इट इज लाइक, कहते ना, ब्रीथ भी मत करना, बिकॉज वो ब्रीदिंग की भी आवाज माइक पकड़ लेगी. इफ यू, अगर आप पीछे बैठे हैं जस्ट ऑब्जर्विंग और जस्ट सिटिंग देयर, आप नॉर्मल में हम ना ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं, नो, आपस में जब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट वहां पर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके अलावा सारे लोग एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न, दैट जब आप डबिंग रूम में हैं, यू एक्चुअली आप ब्रीदिंग भी बंद कर दीजिए उस समय. यू नो, यू लर्न टू कंट्रोल योर ब्रेथ, योर वट एवर, हल्के फुल्के साउंड, बॉडी मूवमेंट. यू नो, आप हिलेंगे भी तो थोड़ा सा आवाज आती है, आप यू नो थोड़ा सा अच्छे से बैठेंगे तो वो सोफे की आवाज आ जाएगी. तो यू लर्न, आप सीखते हैं हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी. करेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप नहीं सीख पाते अदरवाइज. एंड जब आप अपना कैरेक्टर डब करने जाएंगे, व्हेन यू आर डूइंग solo, this helps you a lot, because आपने already सीखा हुआ है when you have done crowd dubbing, that जब तक आप you know take दे रहे हैं, जब तक आप perform कर रहे हैं, आप हिलेंगे भी नहीं. भले मक्खी तो होती ही नहीं है, बट यू नो आपका बाल इधर आ गया, बट यू विल नॉट इवन थिंक ऑफ रिमूविंग योर हेयर, शायद उससे आवाज आ जाए थोड़ा सा मूवमेंट से. तो आप ये सब सीख जाते हैं क्राउड डबिंग के दौरान. और एक बहुत अच्छी चीज है क्राउड डबिंग की, जो हम में से किसी ने नहीं बोली, बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं क्राउड डब से, बिकॉज डबिंग में अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो बिल्ड फ्रेंडशिप्स, क्योंकि आप हाय हेलो होता है या वेटिंग पीरियड है तो आपने थोड़ी बहुत बातें कर ली, कभी कभार हैंग आउट कर लिया, अदर देन यू नो crowd dubs, I mean other than your dubs, but yeah, in crowd dubs you get that time together, and at times those bonds kind of are really cherishable. Absolutely. So, and Absolutely. I think that human aspect is very important. आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की, क्राउड डबिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट किसी फोरम पर इस टॉपिक पर आज तक बात नहीं हुई, एंड इट इज सच अ पिटी. इतना महत्वपूर्ण काम है ये. वहाँ पर आप जब आप क्राउड में डब करते हो, ये जो भी नाम ले लें, एम्बियंट वॉइसेस कह लें, ग्रुप डबिंग कह लें, बट मायने इसके ये हैं कि आपको एक भीड़ में अपनी पहचान बनानी होती है, और आपको अपने अभिमान को तो छोड़ना ही पड़ता है, कई बार अपने स्वाभिमान को भी ताक पर रखना पड़ता है, और धीरे धीरे आपको इस भीड़ में अपनी आवाज़ को पुरजोर सुनाना पड़ता है लोगों को, और कितनी सारी चीज़ें होती है. बड़ा संघर्ष का काम है, बट जो लोग इस आग से तप कर निकलते हैं, या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, या फिर वो खरा सोना बनकर निकलते हैं. तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग जिन्होंने शुरुआत में क्राउड डबिंग की है, आपके सामने है कि भस्म तो हुए नहीं हैं, बट खरा सोना बन के निकले हैं. सो माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज रिस्पेक्ट the fact that these guys are here to talk about, and they are talking in such glowing terms about this aspect of the craft. But yes, there can be a debate. I'm glad that we did have a debate, a very healthy debate. और बहुत बातें हो सकती हैं कि इसको आपको क्या नाम देना चाहिए. You should not look down upon it. और ये कोई एक दिन में चेंज नहीं होगा माहौल. ये हवा धीरे धीरे बदलेगी, एक एक करके लोगों का नज़रिया बदलना ज़रूरी है, और आगे जाके होगा. बट हमने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, एक चिंगारी जो है वो छेड़ दी है, और एक यही चिंगारी आगे जाके लॉ बनेगी, और एक it will transform into something magnificent is what we can hope for in our lifetime, if we can expect the same kind of dignity that the Western countries accord to incidental or ambient voices, and treat them absolutely with the respect that they so deserve. I think if we can reach that in this lifetime, it will be a great achievement, no? Absolutely. Yes, sir. Absolutely. And we all definitely we Very have to well start said. respecting. जो लोग नहीं करते, please अभी से change कर लीजिए. Well said. बिल्कुल. Thank you everyone, and it has been a beautiful evening. Thank you for sparing your very precious time, Rohit, Renu, Rajshri and Meena. Thank you so much. I really appreciate this.